Hello, dear students. Good evening. Namaste, everyone. How are you all? I'm also doing good. Thank you very much. How is audio and video? Perfect. Okay. Good evening. Okay. So let's start now. So today I have collected a few sentences for you. You have to correct those sentences. These sentences are having some errors and you have to make it correct. These all are based on the topic tense only. We have studied tense and voice, active and passive voices, along with the tense introduction, right? So, can I expect you to try these questions? Okay. So, I'll be writing the sentences one by one here. The first sentence and the instruction, first of all, find the errors and make the sentence correct. And the first sentence for today is it is snowing. Okay. It is snowing for 2 days. Here is your first sentence. Read it carefully, find the mistake, and you can let me know the answer in your voice. You can just speak to let me know your answer. Okay. So, okay, do one thing. First raise your hand. Okay, first raise your hand, and then I'll name one by one, and you can answer. First is Anurag. Okay, Anurag. Okay, Manish, you also raised hand. Apurv. I did not get your point. Would you like to repeat? Okay, Ronak. Okay, well, Anjali.
Oh, so you are Anjali ma'am, not just Anjali. Okay, Anjali ma'am. Okay, not saying anything. Anyone else? It's over? Yes, sir. It is. It Yeah, has Rishiden. been snowing. It Uh, has been snowing for 2 days. oh, yeah, that's perfect. Actually, this sentence has been written in present continuous. It is snowing. It is snowing. It is a present continuous, right? Present continuous. But notice the action is just not momentarily. It's not a momentary action. It has been snowing for 2 days. I told you, जब भी कोई एक्शन काफी पहले से चला आ रहा हो एंड पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, अभी तक खत्म नहीं हुआ, आगे भी कंटिन्यू रहेगा. Okay, it is more likely to continue further. It has started very long ago. It started very long ago. It has not ended up yet, and it is more likely to continue further as well. इस तरह के सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं. दैट्स नॉट द करेक्ट टेंस फॉर द सिचुएशन. इट शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. जब भी सिचुएशन, देखो टेंस, there are various tenses. We have studied 12 tenses for active voice and 8 tenses for passive voice. So if we count them all, we have 20 varieties. तो अब ये varieties, how will you use them correctly? You must understand first the structure along with the situation. अगर आपको सिचुएशन ठीक से समझ नहीं आती तो आप स्ट्रक्चर्स को रटकर भी सही तरीके से उसको यूज नहीं कर सकते. स्ट्रक्चर्स को रटने से आपकी राइटिंग स्किल में थोड़ा सुधार जरूर होगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट योर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल. ठीक है, आप अगर सिचुएशन को ठीक से पकड़ोगे, सपोज समवन इज टेलिंग यू समथिंग, यू आर लिसनिंग, but you will not be able to understand exactly what the person is telling to you, क्योंकि आप उस टेंस के सिचुएशन को ठीक से नहीं समझते. वो बोल रहा होगा क्या पता पास्ट के बारे में और आपको लगेगा कि वो बात कर रहा है प्रेजेंट के बारे में. means that type of miscommunication may happen. Your communication will not be better if you don't understand the situation perfect, correct for that tense, for that particular tense. तो ये जो सिचुएशन है इसमें साफ साफ लग रहा है कि 2 दिनों पहले ये एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी भी यहाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस V4 है ना, ING लगा हुआ V4, मैंने आपको बताया था. V4, व्हाट्स V4? वर्ब फोर्थ फॉर्म. when we use ing at last it becomes V4, fourth form of the verb. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है ये, मतलब ये इट हैज नॉट बीन एंडेड येट, अभी भी खत्म नहीं हुआ, एंड मोर लाइकली टू स्टार्ट कंटिन्यू फर्दर. तो करेक्ट टेंस होगा इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड इट शुड बी लाइक इट हैज बीन. अब देखो पास्ट इसमें लगाना, जैसा कि अनुराग ने जवाब दिया, इट शुड बी इट वाज. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. ठीक है, प्रेजेंट में ही होगा बिकॉज इट इज स्नोइंग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अगर करेक्शन करने जा रहे हो तो करेक्शन कैसे करते हैं, सारी चीजों में बदलाव कर दिया. जस्ट अ सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन आई एम टेलिंग यू, कि आपने पूरे सेंटेंस के पूरे सिचुएशन में चेंज करके एक न्यू सेंटेंस बना लिया
जो कि करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट योर आंसर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज करेक्ट. बिलीव मी, बी केयरफुल अबाउट दिस. पूरे सेंटेंस में पूरा का पूरा ही 100% चेंज करके एक बिल्कुल ही न्यू सेंटेंस फ्रेम किया, दैट इज 100% करेक्ट ग्रामेटिकली, बट स्टिल दैट आंसर वुड नॉट बी करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि आपको करेक्शन के लिए बोला गया था. आप पूरा का पूरा सीन चेंज नहीं कर सकते. सो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, you have to be careful to use only the minimum required corrections. Minimum required corrections. इतने ही corrections करो जिससे वो situation में पूरा का पूरा change ना हो. That is suitable for the situation. It has been snowing for 2 days. Now, if you have any cross question, any doubt, Yes. feel free Yes, to ask. sir. Yes, Ronak. सर आपने it की जगह I Yes, लिख sir. One by one, one by one. सर आपने it की जगह I लिख दिया. ओ अच्छा, ये हाँ ठीक है, concentration loss. It was a concentration loss. हाँ रोनक, you have something else? सर यहाँ सेंस नहीं लगा सकते फोर की जगह. नहीं, सेंस रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, इसको समझ लो. बाकी सब भी सिंस एंड फॉर, these are the two different words. You need to use them carefully. Since is used for before point of time, before point of time. ये क्या चीज है, आते हैं उस पर, पहले ये देख लें. फॉर का क्या, इट इज यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम. दोनों ही टाइम है, बट एक है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब यू नो व्हेन इट स्टार्टेड. ध्यान से सुनना. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब यू नो व्हेन इट स्टार्टेड, you don't know how long has been, but you know when it started. You know when it started. और पीरियड ऑफ टाइम में यू डोंट नो व्हेन इट स्टार्टेड, बट यू नो हाउ लॉन्ग इट हैज बीन. Okay. You don't know when it started, but you know how long it has been. It has been. Okay. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं. सिंस मंडे, मंडे से, ये नहीं पता कितने दिन कितने घंटे बीते, कितने महीने बीते. वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट हैज बीन, बट वी नो व्हेन इट स्टार्टेड. सिंस मंडे, सिंस 1980, सिंस मार्च 2021. हमें पता है कि मार्च 2021 में स्टार्ट हुआ कुछ, बट हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने महीने बीत गए. वो तो काउंट करेंगे तब पता चलेगा, बट स्टार्टिंगली इट्स नॉट रेडीमेड इंफॉर्मेशन. आप खुद पता लगा लोगे वो और बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. आप कैलकुलेट कर लोगे ऐसे करके कि हाँ 4 महीने बीते, पता तो है, ठीक है. आप क्या कर लोगे कैलकुलेट, दैट्स नॉट अ मैटर. बट सेंटेंस आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि कितने महीने बीते. सेंटेंस सिर्फ ये बोल रहा है कि कब स्टार्ट हुआ था. अगर ये सिचुएशन कभी भी दिखे कि व्हेन यू नो व्हेन इट स्टार्टेड, यू हैव टू यूज सिंस. दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम. मंडे 6 o'clock, आपको पता है 6 o'clock में स्टार्ट हुआ, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम. तो आप वहां पर सिंस लगाओ. सिंस
6 o'clock, since Monday, since April, etc. पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम में आपको ये नहीं पता कब स्टार्ट हुआ, आपको ये नहीं पता कब स्टार्ट हुआ, बट यू नो हाउ लॉन्ग, कितना टाइम बीत गया, 4 घंटे बीत गए, तो यू विल से फॉर 2 days, फॉर 3 hours, फॉर 5 years, एटसेट्रा, फॉर 6 months. तो आपको ड्यूरेशन मालूम है. आई होप दैट्स क्लियर टू यू. क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here is the correction for this. Let's move to the next. Ready? Yes, yes, sir. And the next is I have met him yesterday. I have met him yesterday. Read the sentence carefully and find out the mistake, and raise your hand before you answer. I'll give you a chance to tell your answer. Okay. Rishidev, Anurag, Ronak. Okay, so Rishidev, you start. Yes, sir. I had met him yesterday. Okay, Rishidev is done. Now, Anurag, your turn. I met him yesterday. And Ronak. I had met him yesterday. Who else? And if you have answered, please lower your hand. दोबारा क्लिक करो रेज हैंड वाले ऑप्शन पर, आपका नाम वहां से हटेगा. अपूर्व. I had met him yesterday. ओके. मनीष. I had met him yesterday. ओके. और इसके बाद कौन है? जिसने आंसर दे दिया हो वो दोबारा रेज हैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर ले, ताकि आपका नाम वहां से हट जाए, बाकियों का नाम दिखे मुझे. अपूर्व हैव आंसर्ड, राइट? एंजल, योर टर्न. I had met him yesterday. ओके. श्वेता. I met him yesterday. Okay, anyone else? Anyone else there? Well, that's appreciable. Many of you tried. Being correct or not is another thing, but you tried. That's appreciable. I appreciate your efforts. Actually, what we want to say and which tense we are using to say are not matching with each other, are not aligned. हम जो बोलना चाहते हैं और उसे बोलने के लिए जिस टेंस का हम यूज कर रहे हैं, they are not aligned properly. हम क्या कहना चाहते हैं? That's a very simple situation. कि मैं उससे मिला. That's a very simple situation. Why not to use only past simple instead using past present perfect? It's a past event. Let's use past simple. मेरी तरफ बोला. So those who answered I met him yesterday are correct. I met him yesterday. यही चीज आप सबको सिखाने की कोशिश में कर रहा हूं. मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, फ्रॉम द डे वन व्हेन आई टोल्ड यू, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग द टेंस, आई टोल्ड यू
कि आपको अगर टेंस पर कमांड करना है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, यू हैव टू बी फोकस्ड ओवर टू मेन थिंग्स। इसके दो पार्ट बना लो, दो हिस्से हैं। एक चीज है कि आप टेंस के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, एंड आई बिलीव मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर, सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। बहुत कुछ ही थोड़े से स्टूडेंट होंगे जिन्हें स्ट्रक्चर्स ठीक से याद नहीं होगा, क्योंकि मैं ही कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई राउंड टेंस और वॉइस हम कर चुके हैं, राइट। सो मेनी ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं सीधा सीधा स्ट्रक्चर लिख कर दे दूं तो आई गेस ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो पहली चीज है कि आप स्ट्रक्चर सीखो, ताकि जिस स्ट्रक्चर की जब जरूरत पड़े आपको सोचना ना पड़े कि इसमें हैव लगाऊं, हैड लगाऊं, V2 लगाऊं, V3 लगाऊं, which form of the word should be used there. It should be ready to use. So structure is the first thing. Second thing is the situation. अब आपको ये भी सीखने की जरूरत है क्या सिचुएशन होनी चाहिए परफेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर टेंस। अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कल मैं उससे मिला, कल मैं मिला, इट्स अ पास्ट इवेंट, not a present event, but I am telling this in the present perfect. So why to make the sentence complex when it is possible to say in a very simple manner? So the perfect tense for this is past simple. I met him yesterday. If you have any question, if you want to discuss, tell me, it's open. सर हेड का उपयोग क्यों नहीं किया? कहना क्या है हमें? हैड कहने का मतलब होता है, आप अगर परफेक्ट टेंस यूज करते हो, परफेक्ट का मतलब कि द वर्क वॉज डन, यू आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स, यू आर हाईलाइटिंग द कंप्लीशन, राइट। व्हेन यू यूज परफेक्ट, when you use present perfect or past perfect or future perfect, you are highlighting the completion. हो चुका था, हो चुका है, you are highlighting the completion. आप ये कह रहे हो कि मैं उससे मिल चुका था, लेकिन यहां ऐसी कोई बात आपको नजर आती है कि जिसमें हमें हाईलाइट करने की जरूरत पड़े? मैं मिल चुका था, जस्ट मैं मिला। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन not to express, not to stress over the completion? Yes, sir. यस सर। हाँ, अगर आपको लगे कि नहीं कंप्लीशन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, आई हैव टू स्ट्रेस ओवर द कंप्लीशन थिंग, ऑफ कोर्स यू शुड यूज हैड। अब अगर हम इस सिचुएशन में हैड को यूज करें तो सिंपल पास्ट फिर कहां यूज करें? सिंपल वर्ड को हमें समझना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। सिंपल वर्ड का मतलब कि आप कोई एक्स्ट्रा उसमें जानकारी नहीं दे रहे। एक्स्ट्रा जानकारी से क्या मतलब? लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी रिपीट दोज थिंग्स वी हैव डन ऑलरेडी। There are 4 categories of each tense: present, past and future. 4 categories: simple, second continuous. सिंपल में कोई एक्स्ट्रा जानकारी हम नहीं देते, कॉन्टिन्यूअस में एक एक्स्ट्रा जानकारी हम देते हैं, इट्स कॉन्टिन्यू, राइट। सिर्फ एक्स्ट्रा जानकारी आपने दे दी कि द एक्शन इज कॉन्टिन्यू, एक्शन अभी भी गोइंग ऑन, सो यू यूज कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट आप कब यूज करते हैं? जब आपको स्ट्रेस देना हो कि यस दिस इज डन, कंप्लीशन, इट हैज बीन कंप्लीटेड, तो उस पर आप एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन, उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हो, किसी जानकारी के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हो, मतलब जोर देना किसी बात पर। एंड द फोर्थ वन perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. इसमें क्या एक्स्ट्रा जानकारी होती है कि द
the work, the action started very long ago, has not ended yet, and likely to continue further as well. तो सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम देते हैं, आपको वो समझना पड़ेगा, आपको वो याद रखना पड़ेगा, आपको नोटिस करना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा जानकारी हम देते हैं कॉन्टिन्यूअस में, क्या एक्स्ट्रा जानकारी हम देते हैं परफेक्ट में, और क्या एक्स्ट्रा जानकारी हम देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. बट अगर इनमें से कोई एक एक्स्ट्रा जानकारी आप नहीं दे रहे, दैट मीन्स यू आर टेलिंग समथिंग वेरी सिंपल. सो बी सिंपल, राइट? Yes, sir. Okay. Let's move on to the next. I hope that's clear to you. And the third one. The third one is, I used to write poems in my college days. Read it carefully, take your time, then raise hand. I will announce the name and you can answer. Okay, first is Anurag. Anurag has raised hand. Continue, Anurag. Sir, in my college, days should come first. I used to write poems should get later with a comma between. Okay, so you are just changing the order. This comes first and this comes later, right? Yes, sir. Okay. Now, Apurv. So at the place of write, we can put wrote. Okay. Now, Ronak. I write poems in my college days. Shweta. I write poems in my college days. Okay. Rishidev. I wrote poems in my college day. Okay. Any other? Any other? Well, no problem. I appreciate your response. See, some of you have suggested I wrote. Some of you have suggested I used to wrote. Right? These are the things you suggested. And one suggestion was just to flip the order of these two segments of the sentence. First, the second segment should come first, and this first segment should go later. That was the another suggestion. Well, let us discuss about your suggestions first. Then I'll come to my own suggestion. I'll give you the correct answer. Notice, I wrote. Grammatically, it will be correct, but it will not express what you want to express. जो आप कहना चाहते हो वो इसमें express नहीं हो रहा. You are grammatically correct, but you have changed the expression. So I don't think that's correct. And this is the grammatically wrong. You cannot use the two verbs both in V2.
I used, like Apurv, you said this, right? Subject and V2. You already have taken the structure of simple past, past simple. That's the same thing. Subject plus V2. Now after 2, you should not use again V2. This is called infinitive. I hope you are aware of infinitive. I told it earlier also. 2 plus verb, Yes, sir. 2 plus V1 is known as infinitive. 2 के बाद कभी भी V2, V3 वगैरह यूज नहीं करते. We always use V1 after 2 and it is called infinitive. ठीक है. Infinitive जैसे to write, to go, to see, देखने के लिए, जाने के लिए, लिखने के लिए, etc. So these are not the correct suggestions. Actually इसमें tense की गलती है ही नहीं. There is no error in the tense. मैंने जानबूझकर एक सेंटेंस ऐसा डाला, मतलब हमारा ब्रेन एक पैटर्न पे काम कर रहा होता है. You have already done 2 sentences before this. This is the third one. तो सबने दिमाग में सेट कर लिया कि अब जितने भी सेंटेंसेस आएंगे हमें उन सब में टेंस की करेक्शन करनी है, राइट? Yes. सो दैट वाज अ ट्रैप. बी केयरफुल. तो चलो मैं सबसे पहले अब ये बता दूं, मुझे लगता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर से यू आर नॉट फ्रेंडली. इस तरह के स्ट्रक्चर को समझ लो. देखो, मैं लिखता था, मैंने लिखा, मैं लिखा करता था. सब में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है क्या? Yes. मैंने लिखा और मैं लिखा करता था. फर्क है इन दोनों में? Yes, sir. एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट है यहाँ. आई यूज्ड टू राइट, मैं लिखा करता था. तो याद कर लो, ये स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं है. पहली बार देखा हो तो इसको याद करो, इसकी प्रैक्टिस करो, और भी बहुत सारे वर्ब्स डालो इसमें. वर्ब की चेंजिंग करो, राइट की जगह रीड लिखो, सिंग लिखो, स्पीक लिखो, वॉक लिखो. बहुत सारे वर्ब्स यहाँ डाल सकते हो और बहुत सारे प्रोनाउंस यहाँ डाल सकते हो. आई की जगह यू, दे, माई फादर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, कुछ भी. तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर करो प्रैक्टिस. ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाया. आई यूज्ड टू राइट, ये सिंपल पास्ट है. आई यूज्ड, सब्जेक्ट प्लस V2, दैट्स सिंपल पास्ट और पास्ट सिंपल. आई यूज्ड टू राइट, इसका मतलब निकलता है मैं लिखा करता था. ठीक. तो इसमें टेंस की कोई गलती नहीं है. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज इन द प्रीपोजिशन दिस टाइम. इन, जरा देखो ना क्या बोल रहे हैं. आई यूज्ड टू राइट इन माई कॉलेज डेज या ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. व्हाट डू यू थिंक? गिव इट अ थॉट. During. दैट्स द पॉइंट. तो चलो कोई बात नहीं, न्यू स्ट्रक्चर सीखने को मिला. ये स्ट्रक्चर सीख लो, प्रैक्टिस करो, और भी सेंटेंसेस बनाओ और यूज करो फटाफट बोलने में इनको. एंड आई एम नोटिसिंग वन मोर थिंग. आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू ओनली इन इंग्लिश, बट व्हेनेवर यू रिप्लाई you don't use English. If you want to be good at English, if you want to be a good communicator, try this, practice this. I used to write poems during my college days. I hope that's okay for you. Yes. Yeah.
Yes, sir. Okay. I hope you're ready for the next. Yes, sir. Yes, sir. Monty is learning to play guitar. Read it carefully. Sir, it should be how to play guitar instead of to play guitar. That's perfect. The single answer, and that's correct. Yes. We never say like this. It should be how to play guitar. And if you prefer, it should be an article also in this place. Play a guitar. Article also should be added there. Correct. Monty is learning how to play a guitar. So there are two corrections. Okay. Okay. Next, number 5. They'll be loving their job. Ronak? They are loving their job. Okay. Pragyans? Sir, my is also that they are loving their job. The same, right? Yes. Okay. So Ronak and Pragyan says the answer is, the sentence is already correct. Who else? Yes, sir. They are loving their job. Okay. Well, देखो इसमें क्या है इनकरेक्ट और किसे हमें करेक्ट बनाना चाहिए. फर्स्ट साइड में सेंटेंस बहुत ही परफेक्ट ही लगता है. इट सीम्स देयर इज नो नीड टू मेक एनी करेक्शन, राइट? सबको ऐसा ही लगा कि इसमें तो सेंटेंस तो ऑलरेडी इज करेक्ट है, नो नीड एनी करेक्शन. ठीक है. देखो एक्चुअली देयर इज अ न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू. Verbs are of two types. Verbs are of two types. First,
वैसे तो बहुत सारी और भी कैटेगरीज बनाए हुए हैं, बट ये एक डिफरेंट क्राइटेरिया है वर्ब को कैटेगराइज करने का। इससे पहले भी हमने सीखा था ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, 2 टाइप के वर्ब, तो वो एक अलग बेसिस था उसका। अब यहाँ एक अलग बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। वी आर कैटेगराइजिंग द वर्ब ऑन द अनदर बेसिस नाउ। सो फर्स्ट इज डायनेमिक and the second is stative. इसको समझ लेते हैं। डायनेमिक वर्ब क्या होता है? डायनेमिक वर्ब is the word that is an action word. You do something, you have to move physically. Yes, like go is a verb, that is a dynamic verb. ये नहीं कि बैठे हैं आंखें बंद करके और गो हो गया। कैन यू गो विदाउट मूविंग? No, sir. So those verbs where you have to do something, you have to move to do that, those are dynamic verbs. To sing, गाओ बिना मूवमेंट के, एटलीस्ट मुंह को तो हिलाना ही पड़ेगा, आवाज तो निकालनी पड़ेगी, मूवमेंट तो होगी। लेकिन फिर ये स्टैटिक वर्ब्स कौन से होते हैं? वेयर यू डोंट हैव टू मूव फिजिकली। लव is an example. अब अपने काम से किसी को बहुत लगाव है, तो लगाव रखने के लिए मूव थोड़ी ना करना पड़ता। समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे करना क्या है? द सेंटेंस इज रिटन इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सो दैट्स रॉन्ग. इट शुड बी फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल. they will love their job. अब जरा दोनों को कंपेयर करके देखो, समझो इसको. कुछ समझ आ रहा है? They'll love Yes. their job. Future continuous will be more meaningful if you are using any dynamic verb. This verb is an stative verb. This verb is stative verb. No need to use future continuous. देखो कंपेयर करके देखो, पढ़ो दोनों सेंटेंसेस को. Do you think it makes sense? Simply use future simple, not future continuous. Is that okay? Yes. Yes. Sir. ठीक है. चलो, आज हमने कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं अभी, और मैंने कोशिश की कि मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूं. I tried to give you the full explanation of the corrections. I tried to explain the logic. I hope you have understood it. I'll send the class notes and recordings also. If you have missed something, you can go through the recording and class notes as well to make it a perfect learning. Okay, let's continue in the next class. Till then, bye bye. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye.